Okay, so today is 2nd of December 2024. It is 8 p.m. and we will be having our first lecture on the IELTS speaking module. What is the speaking module? What does it assess? What it does not assess? What are the myths? What are the facts? How do examiners evaluate and critically assess your speaking skills? And above all, what really is described as a band soul? Let's get started, Mr. All right. So the basic guidelines for the speaking test is that it is the same whether you're appearing for the general test or the academic version. It lasts from about 11 to 15 minutes. And I strongly advise that you arrive at least 15 minutes or at least 30 minutes prior to the start of your test. You don't have to be nervous because it's not going to be a knowledge test and you don't need to be confused. It is not going to test your knowledge. They're not going to test your patience. They're only going to test your speaking skills. So what exactly are those speaking skills? So they're basically going to be three parts in speaking. Part one is going to be the introduction about you, which is going to be around 5 to 7 minutes. The second part is going to be a cue card, where you'll get a topic with the three of the bullet points, and then you'll need to practice. You'll have around 1 minute to prepare the notes, and another up to 2 minutes to speak on the topic. I mean, you cannot and you should not speak less than 1 minute. You should speak at least 2 minutes on that topic. Now, before we talk about the part one, it is important to know that there is something that I like to call part zero. और वे कहेंगे कि ये part zero क्या है? So let me tell you something that what I consider to be part zero. Part zero is where you enter the room, you meet, and you and the examiner you get to greet each other. Assalamu alaikum, walaikum salam, hi, how's everything going on? And you um, eventually what you do is you sit down, you get to know each other, you get comfortable. That is what I call part zero. Part zero में होता क्या है? Part zero में you sit down, greet each other, and then you sharing your details like क्या नाम है आपका, क्या कर अपना आईडी कार्ड दिखाएं, हाँ जी, a few questions like these. यहाँ से एग्जाम स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से ग्रेडिंग नहीं होती, लेकिन पार्ट जीरो में इट्स इंपॉर्टेंट टू बिल्ड रेपो बिटवीन यू एंड द एग्जामिनर. Now I don't want you to of think of that examiner as an examiner. You think of that examiner as just a random person, like an old friend, and you're meeting after a long time. मतलब कि don't have the thoughts कि जी मेरा टेस्ट होने जा रहा है. That should not be your thinking. Your thinking should be कि मेरा टेस्ट नहीं होने जा रहा, मैं पुराने दोस्त से मिलने जा रही हूँ या मिलने जा रहा हूँ, गपशप लगाएंगे. That is exactly what they want. They want a professional gupshup. That is what this actual speaking skills is. It's not about memorizing your answers. Please do not memorize answers. मुझे पता है आइल्स के टैबलेट्स हैं स्पीकिंग के राइटिंग के इंटरनेट भरा पड़ा है. वो कहते हैं कि जी ये 15-20 क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं, इनको हम मेमोराइज कर लें और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे. IELTS does not work like that. It's a logic test. It is not a rote learning. It does not test your rata skills. Okay. What is part one all about? Part one is all about you. The type of questions are relevant to your work, studies, family members, housing, your likes, your dislikes, your surroundings, and friends and family members. There's straightforward questions with short and straightforward answers. You need to spend at least 10 to 15 seconds per answer. And your time should be around 5 to 7 minutes. There are about going to be 4 or 5 different questions. And the maximum duration is 5 to 7 minutes for part one. So the way it works is, so let's suppose I'm the candidate, I enter the room, I greet the examiner
whoever he or she is, male or female. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Hi, how are you doing? Alhamdulillah, I'm doing fine. What about you? I'm doing good. Please have a seat. Yes, thank you. Yes. So, what is your name? My name is Yasir Said. You can call me Yasir. All right, Yasir. So, can I please check your ID? Oh, yeah, sure. Where is it? Okay, yeah, there you go. That is how natural you have to be. ये नहीं, my name is Yasir Said. जी, yes, ID card. Okay. अच्छा, और आप इस तरह बैठ गए. Now, yeah, so what do you do? Do you work or study? और आप कहें work. Work is not an answer. आप कहें study. Study is not an answer. You're getting my point? Work or study is not an answer. Even if they're asking you if you work or study, it is not an answer. So what is an appropriate answer? If someone were to ask me, what do you do? I say, oh, I teach IELTS full time. I'm an online IELTS trainer and I'm also a digital marketing consultant. And I've been doing it for the past 2.5 years and I do it online. 10 to 15 seconds, a slight elaboration. Acha. Do you enjoy teaching? Yes. No. आगे थोड़ा सा थोड़ी सी वजाहत जिस तरह मेरे को पूछता है यार मजा आ रहा है मैं कहूं, नहीं यार मजा नहीं आ रहा है यार पता नहीं लाइफ किधर जा रही है ऐसे ही है ना जस्ट से इट इन इंग्लिश डू यू एंजॉय टीचिंग या ऑफ कोर्स is something I'm really passionate about, and I would rather spend years teaching because I love that my students learn something new. मैंने मेमोराइज नहीं था कि आंसर मेरे पॉजेज और आर्म्स नेचुरल थे बहुत ज्यादा भी नहीं थे कि आई टीच आई लव टीचिंग माई आई बहुत ज्यादा भी नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कि आई लव टीचिंग एंड बिकॉज माई स्टूडेंट्स लाइक फास्ट तो बोलना ही नहीं ना स्लो भी नहीं बोलना टॉक इन अ नेचुरल टोन no need to use idioms. Oh, I am over the moon, this is ought to be like this, that shall be done like this, life is not a bed of roses. No, 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 no. No need to use idioms, no need to use fancy language, no need to show the examiner कि मुझे ना मैंने बैंड 9 की पूरी vocabulary memorize की है. No need to do that. Be natural, talk fluently. एक चीज मैं बता दूं, आपकी प्रोनाउंसिएशन को तो वो देखते हैं ही, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जब आप बोलते हैं वो भी चेक होती हैं, बट ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे ज्यादा क्या चेक होता है जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, द वे यू सिट एंड द वे यू टॉक. स्माइल ऑन योर फेस एंड सिट. अगर ऐसे बैठे हैं ऐसे, यस, ओके, और मैं ऐसे, या, ओके, आई नो, थैंक यू. ये सी द डिफरेंस. ये चीज वो मांगते हैं. मैं ये कहूंगा नहीं, मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा जो मैं आगे कहने वाला हूं कि आप इस तरह करें, लेकिन आपकी आपके नॉलेज में इजाफे के लिए जरूरी है. आई थिंक आई टेल यू दिस, समटाइम्स इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर्स आपकी थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन, थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस को की वजह से ज्यादा आपको जहां पे 6 आ रहा था ना आपको 7 दे देते हैं. अगर वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट मार्किंग क्राइटेरिया के मुताबिक चले ना, आपका 6 बन रहा है, बट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर बोल्ड व्हेन यू आर स्पीकिंग, you were really confident, you had a positive body language, so they will actually ignore that. But again, do not take it for granted. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रिटन रूल नहीं, ये उनके मूड पे डिपेंड करता है कि वो एस्पेक्ट्स जिन्हें इग्नोर वो अपनी मर्जी से करते हैं, वो करना चाहें कि नहीं. बिकॉज यूजली व्हाट दे डिमांड इज कि एक बंदे को बोलना सही आता है. आप डिटरमाइंड को आप डेटरमाइंड बोलेंगे बार बार, डेटरमाइंड डेटरमाइंड, तो वो अपना तंग आए कहेगा कि नहीं यार इसको बोलना नहीं आता, इसके मार्क्स काटो. अब ऑफ कोर्स को लोग ऑफकोर्स बोलते हैं, ऑफकोर्स, ऑफकोर्स गलत है प्रोनाउंसिएशन. वाटर है वाटर नहीं, वो था भी नहीं. एक्सेंट तो बनाना ही नहीं. द मोमेंट यू क्रिएट एन एक्सेंट, अमेरिकन या ब्रिटिश एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए, खत्म, खलास, टाटा बाय बाय. बिकॉज आईएल्ट्स, ब्रिटिश काउंसिल आईडीपी और आईएल्ट्स के एग्जामिनर्स अच्छी तरह जानते हैं एंड दे अंडरस्टैंड इट कि जो स्पीकिंग टेस्ट है ना, दे आर कंडक्टिंग इट
in a country or in a set of countries where there are non-native speakers of English. इवन सुंदर पिचाई की भी सही, सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल कभी डेवलपर को डेवलपर बोलता है, डेवलपमेंट को डेवलपमेंट बोलता है, बट ऑफ कोर्स वो तो ही इज द सीईओ, बट अगर उन्होंने उसके प्रोनाउंसिएशन ही देख के उसे हायर करना होता तो ना करते, वो उसके स्किल्स और उसके कॉन्फिडेंस को देखा है। तो दे अंडरस्टैंड कि इंडियंस विल नेवर प्रोनाउंस डेवलपर द राइट वे, वो कहेंगे वो डेवलपर बोलेंगे, ठीक है, लेकिन उन्हें पता है कि ये डायलेक्ट बोलने का अंदाज यहाँ पे है ही ऐसा, तो वो इस चीज को इतना नहीं वो करते। एक्सेंट तो वो देखते ही नहीं है, दे डोंट लुक एट योर एक्सेंट। उन्हें पता है इंडियंस, पाकिस्तानी, बंगालीज, नेपाली, श्रीलंकन, इनका एक्सेंट नहीं है, अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट नहीं है, ना ही वो डिमांड करते हैं। आप बना के करेंगे आपके मार्क्स और कम आएंगे, ठीक है। पार्ट वन में जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस, सो let's suppose, all right, Yasser, so what do you do? Do you work or study? Thanks for asking me this question. I am a professional digital marketing consultant, and I also have my digital product by the name of IELTS Karo. I teach IELTS online, and it amazes me to see students getting amazing high band scores that allow them to pursue their dreams. All right. So, okay, let's talk about your hometown. Where do you live? Johor town. नहीं, कितना absurd सा जवाब है. Where do you live? Lahore. I'm originally from Faisalabad, but it has been more than 2 decades. We're residing in Lahore, and the area is Johor town. ये है elaboration. What kind of place is it? Good. What type of business people do? Job. Do you plan to shift from your hometown in the future? No. नहीं, ये जवाब नहीं है. वो आपका ना इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं. So what kind of place is it? Oh, it's a great place, bustling with a lot of people. When we shifted here 20 years ago, there was barely anyone. And now it's jam-packed. The Jeevan market is famous for its food. आप, कोई अस्करी में रहता है, कोई कराची में रहता है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई मुस्लिम टाउन में है, आप अपने एरिया के बारे में बता रहे हैं. No need to memorize an answer. Do you plan to shift from your hometown in the future? That is a tough question. Mm, as of now, as of date, no. But in the future, we may have plans to move to perhaps maybe Wabda town or Bahria town. Note kar rahe how natural the answer is. What changes and improvements can you make in your hometown? मैं कहूँगा in Lahore, the biggest problem is traffic. If there were a certain set of rules that had that were to be enforced, I would love to see that happen because I don't want to get stuck in hours long of traffic. Note कर रहे हैं मैं बोलने का अंदाज कि मतलब कि सपोज मुझे अगर बिरयानी पसंद है, ये नहीं कहूंगा मैं आई लाइक बिरयानी, मैं कहूंगा आई एम क्रेविंग फॉर बिरयानी. और मैं अगर कहूंगा ना कि मुझे बैंगन नहीं पसंद, मैं ये नहीं कहूंगा मुझे बैंगन नहीं पसंद, मैं कहूंगा मुझे बैंगन नहीं पसंद, आई डोंट लाइक मी, आई डोंट लाइक एग प्लांट, आई डोंट नो. It is your expressions and emotions that count. It is the way you talk, the way you deliver your message that counts. I hope that I'm making sense so far. Okay. Now, let's talk about where do you study? Lahore School of Economics. What do you study? MBA. Well, I recently completed my bachelor's and I'm now taking admission at LSE, doing my master's in business administration. Where do you study? I'm currently studying at Lahore School of Economics. And what do you study? Oh, I've enrolled in the Master's of Business Administration Executive Program. It is for professionals only, and the classes are on Sundays. What do you plan to do in the future? Oh, that is a difficult question. I wish I could have a clear answer for it. So far, I've decided in the future I want to plan my and open up my own agency, digital agency, and to have my own ed tech startup. Okay, what do you enjoy the most about studying? The best part about studying for me is that you get to learn a lot of new things. For example, new topics, new research. It expands your knowledge and broadens your horizon. It opens up your mind. And use your hands. ऐसे नहीं,
I enjoy a lot about studying because studying helps me to improve my knowledge and it also helps me to improve my exposure. That is why उसने कहना अच्छा बस आगे चलते हैं. Use hands, have a smile on your face and be confident. What is your favorite food? Biryani. No, I can't really say what my favorite food is, but in meat dishes, it would be biryani, and then right after that, it would be chicken korma. Do you prefer fast food over home cooked? There is no way I prefer fast food. There is no better option than than the amazing meals that my wife cooks at home. I mean, what better to eat? What is your favorite restaurant? For a lot of years, I've been to Gourmet. That was one of my favorite back then. But now, with the influx of new restaurants, um, I prefer visiting Cheesiest. The amazing taste. Do you like cooking? If yes, then what have you cooked? I do not consider myself as a chef. I'm not a professional cook, but yes, I love to cook. And recently, I've cooked mashed potatoes, steak, and an omelette. I love cooking that specifically for my Sunday's breakfasts. What type of food do people mostly enjoy in your city? So Lahore is basically known to be a cultural point, and people, although prefer fast food, but the vast majority are enjoying desi foods that are of the heritage, like pie, bong pie, nehari, halwa puri. You visit Liberty, you visit the Androon, Lahore, and you find a variety of dishes. अच्छा मैंने इनमें से कोई भी आंसर मेमोराइज नहीं था किया जो मेरे साथ चीजें रिलेट करती थी मैंने उसको बता दी नथिंग वाज मेमोराइज्ड पार्ट टू क्यू कार्ड स्पीकिंग फॉर 1 to 2 minutes ये ना मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको एक कार्ड मिलेगा क्यू कार्ड ये रैंडम ये वो कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि मैं शेयर कर रहा हूं बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि इनमें से कोई आए and sharing of these common words of these common cue cards does not mean कि इनमें से ही कोई आएगा these are just the ones जो कि अमूमन आते हैं again this is not going to be taken as कि जी ये नहीं ये आपने शेयर किया था इनमें से कोई आएगा इनको रट्टा लगा ले इनको याद कर ले ऐसे नहीं ऐसे so these are just examples कि इस तरह के आ सकते हैं so this is a typical cue card उसका स्ट्रक्चर ये होगा अच्छा आपका जो स्पीकिंग टेस्ट है ना ब्रिटिश काउंसिल से बुक करेंगे आईडीपी के साथ आपको ना ऑप्शन आती है इन पर्सन और फेस टू फेस इन पर्सन या ऑन ऑन अ जूम कॉल कोशिश करें अगर ऑप्शन है आपके पास गो विद फेस टू फेस क्योंकि उसमें जब एग्जामिनर आज सामने बैठा होगा ना यू फील मोर कॉन्फिडेंट बट जरूरी नहीं है कि आपको फेस टू फेस एलोकेट किया जाए बिकॉज यू मे नॉट हैव द ऑप्शन आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल में असाइन एंड से कि ले जी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑनलाइन स्पीकिंग का होगा एट 3 p.m. and there's nothing you can do about it. You just have to accept it. वैसे भी the world is going online, so there is nothing wrong about it. होगा online, but it will be at the venue. आपको venue ही जाके देना पड़ेगा घर से नहीं आप कर सकते टेस्ट ठीक है all right so a cue card is basically जब आपके साथ जब वो कहेंगे ना जब आप स्क्रीन पे होंगे जब आपके साथ एक लाइव वीडियो कॉल पे वो आपका स्पीकिंग टेस्ट कर रहे होंगे तो जैसे ही पार्ट 1 खत्म होगा ना वो कहेंगे ऑल राइट वी गोइंग टू मूव ऑन टू पार्ट 2 प्लीज कंफर्म वंस यू सी माय स्क्रीन जिस तरह मैं भी पूछ रहा हूँ ना प्लीज कंफर्म वंस यू सी माय स्क्रीन डू यू सी द क्यू कार्ड ऑन द स्क्रीन प्लीज कंफर्म तो आपने कहना है यस आई कैन सी द कार्ड वो कहते हैं ऑल राइट you have 2 minutes you have 1 minute to prepare on this topic and you will have 1 to 2 minutes to speak on it your time to think starts now जब वो कहता है ना स्टार्ट्स नाउ आपने बोलना नहीं है आपने 1 मिनट खामोश रहना और उस 1 मिनट के अंदर आपने ना तैयारी कर लेने के बुलेट पॉइंट्स मैंने क्या बोलना है नोट्स लिख लेने आइडिया ले लेना है विजुलाइज कर लेना ओके अब जैसे 1 मिनट हो गया ना जैसे ऑल राइट योर 1 minute इज अप
प्लीज कंटिन्यू स्पीकिंग ऑन द टॉपिक। ठीक है। अब आप कहें कि जी आप जिंदगी में कभी आपने म्यूजियम और आर्ट गैलरी में गए नहीं, बट आप बना सकते हो। अगर बना नहीं सकते तो आप म्यूजियम या आर्ट गैलरी की जगह कोई जू लगा दो, कुछ और कर दो। उन्होंने आपके स्किल चेक करने हैं। और ये जो लिखा है ना, यू शुड से वेयर इट इज, व्हाई यू वेंट देयर, व्हाट यू रिमेंबर अबाउट द प्लेस एंड एक्सप्लेन व्हाट यू सॉ, ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए है। यू, इट इज नॉट 100% मैंडेटरी फॉर यू टू टॉक ऑन ऑल ऑफ दीज 3 बुलेट पॉइंट्स। समझ रहे हैं? मेरी समझ आई है कि नहीं? मतलब कि आपको, आपने जेन में बताया ना कि लेट्स सपोज इट्स नॉट अ म्यूजियम और एन आर्ट गैलरी, इट इज व्हाट इज इट, इट इज ओके। सो मैं इसको आंसर करता हूँ। Okay, I've never really been to a museum or an art gallery, but I do remember last time I was in Hunza and I visited the local craftsman shop at a five-star hotel. There was there were souvenirs over there, and there were the local people of Hunza who would meticulously craft those amazing utensils made of those amazing clay pots, as well as the local dresses and other items that were made as part of their local tradition. I mean, I was really stunned when I had a look at it. And I was along with my family and a tour guide, and they informed me that this activity dates back to around 500 years ago, if like much older than the creation of Indo-Pakistan, and it dates back to the age and the era of the British Raj. And I was shocked to see that how well mannered the people of Hunza are and how they have been able to carry that heritage and legacy from generations to generations. So while I was coming from there, I ended up buying a little bit of souvenirs, there were keychains, 2 or 3 different sizes and shapes of clay pots, and as well as a shawl for my daughters. And I personally believe that to be a much better experience than rather I'd visited a museum or an art gallery, because I'm not really a type of person to visit them. But yes, I am a tourist and I love traveling, love seeing new places. I totally made that up. मैंने कभी गया हूँ? मैंने क्या? आई स्वेयर टू गॉड मैं कभी नहीं गया हूँ। मैं आज तक नहीं गया हूँ। मैं स्कर्दू गया हूँ, आई बीन टू कपलू स्कर्दू। लेकिन चूंकि मेरे सामने एक क्वेश्चन था एंड आई वांटेड टू प्रूव यू कि यू डोंट हैव टू हैव 100% नॉलेज ऑफ द टॉपिक। आपने बोलना है उसके रेलिवेंट चीजों को, अपने साथ रेलिवेंसी के साथ कनेक्ट करके आपने बोलना है, एंड बी कॉन्फिडेंट। आई वाज नॉट फास्ट एंड आई डेफिनेटली वाजंट स्लो, और मेरे एक्सप्रेशंस भी थे। दिस इज व्हाट द आईएलटीएस एग्जामिनर्स डिमांड फ्रॉम यू। ये है आपका स्पीकिंग टेस्ट पार्ट 2। वंस योर 2 मिनट्स आर अप, अगर आपका 2 मिनट या उससे ज्यादा जैसे ही होते हैं तो एग्जामिनर से ऑलराइट स्टॉप। आपने इसको ऑफेंसिव नहीं लेना, मैं अभी तो मैं बोलना शुरू हूँ, अभी तो आइडियाज आए हैं, अभी रोक दिया नहीं। 2 मिनट्स मैक्सिमम बोलना, बात खत्म। इफ यू कंटिन्यू तब आपके मार्क्स कटेंगे। भी मैंने इसे कह दिया 2 मिनट्स इनफ कट ऑफ टाइम, व्हाई आर यू स्पीकिंग। वो सिर्फ उन्होंने चेक करना था आप 2 मिनट बोल सकते हैं कि नहीं, दैट्स इट। Then she'll say, all right, we'll now move on to part 3. We will ask you questions relevant to the topic you've answered in part 2. जो part 2 में आपने क्वेश्चन को आंसर किया ना, जिस क्यू कार्ड को, उस क्यू कार्ड के रेलिवेंट they will ask you questions in part 3. And those questions are the ones that are a bit more critical of कहने के, you have to critically analyze them. Okay, critical analysis होगा उन questions का। ठीक है? So the examiner will move forward like, all right, okay, so let's talk about, you've talked about visiting Hunza, and do you believe you should visit the different parts? Do you believe that people should visit often?
people should travel often to the northern areas? And I would say, yeah, absolutely. Every once in a while, at least every 6 months, me and my family members or my group of friends, we we plan up, and for at least 1 week, we turn off our phones, laptops, gadgets, and we head to the northern areas, to the mountainous areas. It is therapy for me. All right. So you've talked about the local culture. How important do you think it is to preserve the local culture for anyone? If you were to ask me, I think this is the most important part of any society. If the local culture is not preserved, the future generations will never know what happened in the past. So I was only able to know the previous the legacy and the culture of Hunza once I saw the traditions. They have kept themselves true to the culture. They know how to preserve it. All right, that's good. So, Yasser, can you tell me a little bit about food? Do you enjoy food of of the area where you go? Uh, yes, of course. I believe once you're traveling, if you do not enjoy the food, just like I have here right now, it's a croissant and a cup of tea. So I don't think you are going to enjoy anything else. You don't enjoy the food. That is the absolutely best part for me. All right, Yasir, last question. Um, how often do you think um, people need to travel? It's up to them. As long as the time and budget allows, you should do it as much as you can. That's it. All right, Yasir. Thank you. That is the end of part three, effectively marking the end of the IELTS speaking test. Allah Hafiz. Hanji, any questions? Bismillah. Hello. Yes. Any questions? Mm, no more questions. जी जी बताएं. Hello. लेक्चर से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वैसे 2-3 क्वेश्चंस हैं। जी जी बता दें. एक तो ये जो आपने एलएमएस का वो है ना, उसमें मैंने उसको सॉल्व किए 2-3 क्विज, लेकिन जो आंसर्स मतलब अगर आपने उसमें सबमिट किया हुआ है कि डिजिट 9 लिखा हुआ है, लेकिन वन वर्ड ओरा नंबर है, तो मैं उसको मतलब एज ए वर्ड भी 9 लिख सकती हूँ, NINE। तो वो इसमें डोंट डोंट वरी अबाउट इट. वो सिस्टम का कभी कभार थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है. जी अदर देन दैट अगर आपका आंसर ठीक है तो विल मार्क इट करेक्ट. डोंट वरी. ओके। और एक जगह और था, उसमें था ब्लैंक में आंसर था 760, मतलब 760 विंडोज। मतलब अगर सेंटेंस को पूरा पढ़ें तो वहां पे 760 विंडोज आना चाहिए था, अच्छा. लेकिन की में था 760। तो क्या चलें, वहां पे वो चेक सेंटेंस करें. पूरा पूरा कंप्लीट देखना पड़ेगा या सिर्फ वर्ड ही एक लिखना पड़ेगा? मैं बताता हूँ इसके अंदर होता ये है. यू जस्ट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. अगर तो आंसर में आपको लग रहा है कि 760 विंडोज होना चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्शन में कह रहा है राइट वन वर्ड और अ नंबर, तो फिर या तो विंडोज आ सकता है या 760 आ सकता है. बेशक सेंटेंस कंप्लीट ना हो रहा हो। नहीं, आइल्स का जो टेस्ट है ना, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये लॉजिकल है. अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग और रीडिंग के पूरे करेंगे ना, यू विल फाइंड आउट कि वो आंसर्स जो ठीक होते हैं ना, उससे पूरे सेंटेंस की भी सेंस बन रही होती है. वो आंसर ग्रामेटिकली गलत भी नहीं होता. जी ठीक है. तो अगर उसकी सेंस नहीं बन रही, इसका मतलब वो आंसर ठीक नहीं है. एंड विल हैव दैट चेक एज वेल. उसकी आप स्क्रीनशॉट हमें भेज दें. ओके। सिस्टम में काफी कुछ बैकएंड पे चल रहा होता है, तो कभी कभार इस तरह की ना छोटी मोटी चेंजेस हो जाती हैं. नथिंग टू वरी अबाउट इट.
जी। we'll sort it out. एक वो मैंने आपको टास्क सेंड किए थे, उनको वो कर दीजिएगा मार्क। मैं उनको मार्क कर दूंगा, मैं डेफिनेटली उनको मार्क कर और दूंगा। साथ वो उसके मुताबिक उसको बैंड भी दे दीजिएगा कितने इसका बनता है, 6 या 6.5 और ठीक हो गया, आई विल डू दैट एज वेल। अच्छा, um, इसके अलावा लेक्चर के रेलिवेंट कोई क्वेश्चन? फरा, मिस फरा, मिस नईमा। नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग होगी सारी? जी सर, ऑलमोस्ट। So we are going to touch on part 1, 2 and 3 for today, and I'm sure आप लोगों की कोई पुरानी अंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन्स कुछ भी हुआ होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। कल से देयर विल बी वन ऑन वन सेशंस, मतलब कि देयर विल बी इन क्लास। If you feel comfortable, you can turn on the web camera. If you don't feel comfortable, you don't need to turn it on. We'll just need to have. I just want to make sure that if one student is opting for the test, for the mock speaking trials during our sessions, everyone else also gets to learn from it. So there is nothing that need to be कि सर वो बाकी है वो क्या सुनेंगे उन्हें so what, ऐसे ही होता है। That's how you learn. Everyone will learn. जब हर एक को मौका मिलेगा तो हर कोई सीखेगा। That is exactly the essence of this. ठीक है? If there are no more questions, we can end the lecture. We can end this lecture, and inshallah ta'ala, we can have another lecture tomorrow where we'll begin with the regular sessions of IELTS speaking mocking test. क्योंकि आज speaking में mock speaking का जो lecture है ना, understanding उसकी यही है. It's now all about mock test. No matter how much you try, speaking और writing है ही सारी practice and practicing in the right way. आप 2 से 3 भी अगर regular mock sessions कर रहे हैं speaking की, you will dramatically improve your speaking. ठीक है? Let's then end the lecture for today. Let's have a lecture tomorrow at the same time, 7:30 p.m. इंशाल्लाह ताला। कोशिश कीजिएगा जरा 7:30 7:35 तक आ जाए। आज भी लोग सारे 8 बजे आए हैं at 8 p.m. उससे मतलब कि 7:45 7:50 पे आए हैं। कोशिश कीजिए जरा जल्दी आ रहे हैं ताकि हम ज्यादा टाइम लगा सकें। ठीक है? इंशाल्लाह लेट्स मीट टुमारो एट 7:30 p.m. टेक केयर एवरीवन। कल के लिए हम लोग मतलब क्या प्रैक्टिस करके आए हैं अगर मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर होते हैं? आप लोग इस तरह करें कि आप लोग कल के लिए ना पार्ट 1 अपने बारे में, और आप क्या करते हैं एक इंट्रोडक्शन के ना आप वॉइस नोट रिकॉर्ड कर दें व्हाट्सएप पे। आप वो कर देंगे, उसके बाद फिर हम असाइनमेंट्स रखेंगे एलएमएस में, हम आपको समझाएंगे कि आपने किस तरह उस असाइनमेंट को फिल करना है। अभी के लिए आप व्हाट्सएप पे बस वॉइस नोट भेज दें। ओके हमारा सर, व्हाट्सएप बिजनेस अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और करंटली हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। हु आर यू? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फरहान नसीर, आई एम डूइंग दिस, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम दिस, या आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, आई लव टू ईट दिस। एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, वी जस्ट वांट टू नो कि आप कहाँ पे लैग करते हैं ताकि हम उस चीज के ऊपर फोकस करें। ओके। चलिए ठीक है, ऑल राइट, अल्लाह हाफिज।